like few people who are sitting in the back. Can you guys come forward? Hi everyone, as given like a very brief introduction of myself, but I really do not want to talk about why I founded my company. It's okay, it should be okay, right? There's a lot of people talking about the struggles of founders. Honestly, I really wanted to talk about the space with the age and the life transactions which we go through. So I'm assuming all of us is around like 20 to 25 age around it, right? Is it anyone outlier here? Of course, I am also an outlier, but yeah. So essentially during this duration, there are a lot of people who will keep giving you advices. कि आपको career में क्या करना चाहिए, how you should go, who should be your boyfriend, who should be your partner, how you want to lead your life. These are major important years where you have to decide how you want to take your life, how your life should look like. So that was the reason I really did not wanted to go into the space and give you any advice कि मैंने क्या किया है, तुमने भी ये करना चाहिए. Essentially, I feel that has been the problem where when I went to a lot of people for advices, a lot of people gave me okay, why you should do that, why you should not do that. But essentially here I want to show and make you feel how that actually happens. So everyone is sitting in a comfortable position. So sit straight and we'll just do a very quick activity together. Everyone is comfortable? Yes. You guys can also join in. Okay, sit straight, close up your eyes. You can keep your feet also a little straight, have little grounding on it, and close your eyes. Think about what are the latest challenges, doubts, dilemma you are going through. It can be smallest of thing. अच्छा कल क्या करना है मेरे को, tomorrow I have to go to few events, I have few options, if I have to go to A, B, C, D, or it can be the biggest existential question कि who am I, what I want to do, where I want to lead my life towards, what should be my career decision going forward, should I do an MBA, should I start my own startup, should I continue the job I'm doing. Notice what is happening in your body when you are thinking about those dilemmas, those challenges which you are facing right now. You guys can open up your eyes now. What did you guys feel? Whatever emotions, whatever you felt in your body, was it like overthinking? Was it going in direction of I don't know what should I do? Anything कुछ तो feel किया रहेगा? Overthinking. Stop. That I think so. Yeah. So anyone else? Okay. Mostly overthinking. Okay. So if you have noticed, while your doubts and while you're overthinking, your body reacts in a certain way. And as much as we want to try to solve a problem, especially that dilemma which keeps running in your head, thinking about it does not really help. You have to get outside your head to make that decision really happen. And essentially when the question is about those biggest things in your life, there are a lot of people who will give you advice, lot of directions who are right. But something which we need to remember is good does not mean that it's right for you. I'll repeat that.
for people who might not have heard that good direction or good person or good career choice does not mean that it would be a right career choice. It would be a right person. It would be a right direction or thing for you to do. So this all kind of brings us to what is the right thing to do then. Any tricks you guys have so far? How did you guys decide कि अच्छा मेरे को ये job करना है? Now with bachelor's के बाद masters मुझसे नहीं हो पाएगा. I'm going and go ahead and do a job. If I want to do an MBA, if I want to do masters, if I want to go ahead and start my job, what? One of the commonest. What else? One of the major reasons, lot of decisions at this age we do is because family saying, "अच्छा ये, this is the probably right direction for you to go. This is तुम्हें मार्क्स अच्छे आए तो तुम्हें मास्टर्स कर लेने चाहिए. तुम्हें मार्क्स कम आए तो अभी जॉब कर लो. तुम्हें मार्क्स अच्छा है तो तुम MBA कर लो. मार्क्स अच्छा है तो तुम्हें साइंस ले लेना चाहिए. ये कर लेना चाहिए. वो कर. Common, very very common, and I think so. I also relate to that. I wanted to do commerce post my 11th and 12th, and still my parents said, "इतने अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें कॉमर्स क्यों करना है? You should go ahead and do science." And I eventually did science, but yeah, I think so. Lot of people, because lot of our major decisions, our family has the biggest role to play. But as we are evolving, there are so many other options which our families are not aware of. So at the end of it, we have to take that lead. We have to take that stand. Okay, this is what I want to do. This is what I feel like it's right for me. If you are with me, then okay. If you are not with me, let's fight few more days and then settle it in our home. But what essentially, I think so. What is that right decision for you? So what are other tricks which you guys use? She mentioned a lot of tricks. Anyone else? Any tricks up for Evaluating our skills and abilities. okay? Am I enjoying doing that? Yeah. Considering it. Most important. जीना भी हमें. Money is important factor. What else? किसी और को कोई डिसीजन बनाना ही नहीं पड़ा है. फ्रेंड्स को पूछते हैं व्हाट आर अदर फ्रेंड्स डूइंग. नो, आई हैव डन दैट. अच्छा तुम MBA कर रहे हो तो ठीक है, चलो लेट मी ऑल्सो थिंक करना है तो देख लेते हैं, साथ में कोचिंग लगा लेंगे, साथ में सब कर लेंगे. व्हाट एल्स? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट? When you think of two options, what you want to do or look like a woman wants a person that दो होगा देखा जाएगा. I get it. And honestly, for longest period of my time, in fact until recently, I still cannot recognize my gut feeling. Itna overthinking, itna my head keeps on working that I cannot really have capacity for my gut. कि छोटे मोटे जो इंट्यूशन आ रहे हैं वो मैं कैप्चर कर सकूं क्योंकि मेरा दिमाग ही इतना चल रहा है. So something which I've done throughout my career life and which kind of led me to leave my job कि अच्छा अभी full time छोड़ के, now it's a very bad financial decision but still I decided to go ahead and start my startup journey. Something which I always did was to ask why not to all the options which I had. So we can do this quick exercise again. So we can do a partner exercise with all of you. So if you can do it with me, you guys are sitting next to your friend, someone you know already, right? इतने शाय अभी क्यों हो? क्लब के मेंबर हो ना सब लोग, एक दूसरे को जानते नहीं हो क्या? So identify a partner next to you. किसके साथ कर रहे हो आप एक्टिविटी? You have to be a devil's advocate, so बहुत fun आएगा. Everyone has identified a partner? Yes. You can go there back. I think the पीछे किसी का नहीं. अश्विन एक इधर
He can do it with me. Okay, everyone has partners now. Everyone is sorted. Okay, cameraman is also sorted. So essentially what you have to do is you have to ask your partner what are their current dilemmas. If it's an option, it can be small. As I mentioned, it can be a smallest decision of what to do tomorrow till your biggest decisions which are what your dilemma is, and give that option. And the partner, another partner has to become a devil's advocate and ask why not? Why not that one? Why not that one? So for example, if my dilemma is कि I'm thinking of doing an MBA, I'm not sure I want to do it. So then my partner will ask me, then job क्यों नहीं करना है? ये क्यों नहीं करना है? Why not masters in? I've done my bachelor's in pharmacy, so why not masters in pharmacy? Why not a job? Why not a startup? So become like a devil's. आपने जितना भी imagine किया रहेगा, embody that devil's advocate and ask as many questions as you can to your partner. Let's start with whose problem are we going to solve amongst the pair? Okay, we have identified that. Yes. Who is the devil's advocate and whose problem we are going to solve here? Have we got some clarity? कितना devil's advocate? Who was the best devil's advocate here? How would I? Who was the best one? Who will vote themselves कि नहीं मैंने तो एकदम ही मतलब मैंने लिख लिए सामने वाला बोल रहे थे बेस्ट है या नहीं ये वाले में पता नहीं। वो वाले भैया ने क्या किया? He gave me mental clarity about my field of study. Like I am not upna bhi डूबा हुआ. I am fine. Maybe I can procrastinate a little more. I have that capacity, and then maybe reality should hit me. For now, it's just. So how did he give you that clarity? So he asked me questions and made me realize that the answers were always with me. I just didn't know the right questions to ask myself. So something which is like absolutely right for you, you will find reasons कि नहीं वो तो मेरे को करना ही चाहिए ना. I know थोड़ा ज़्यादा struggle है. I know थोड़ी ज़्यादा मारनी पड़ेगी मेरे को खुद की. रात भर जागना पड़ेगा. But then you will always find a way to justify why should I do that. And I think so that is the ultimate thing which you should do it. And I think so that's the most right thing which you should move towards working. And matlab, honestly, I wanted to speak about this particularly because I myself have switched multiple careers. This is my third transaction which I'm doing. So I've done my bachelor's in pharmacy, then I've switched to go towards MBA, worked in corporate for a few years. Now I'm building a startup in whole different thing which I have not studied academically, जिसका मेरे को कुछ exposure नहीं है. So as much as all of this confusion kind of lies, and ideally the right answer for me was to stick to corporate, or after my bachelor's in pharmacy maybe pursue a master's in pharmacy and probably specialize there. But that was not the right thing for me, though there were good options. So find what is right for you. Letting go of what is good would be the most difficult thing which you guys might have to face, which I still do. If I have to let go
like a smallest part of my routine because मेरे को थोड़ा extra काम करना पड़ेगा या फिर वो extra काम करना है उसके लिए I have to let go of hanging out with my friends, hanging out with other people. After this event, I have to go to a networking event which I absolutely dread going to because I have to just keep repeating the same recording tape. That we are doing this, we are doing that, we are doing that. But those are things which, at the end of it, I know that this is what I'm supposed to do. That's why those difficult things feel a little more bearable for me to actually keep doing that. I think so. That's all I wanted to discuss. Apart from this, in case if you guys want to still if you guys are still curious about MBA, business, or mental wellness, we can connect after this session. But I just want to leave at a very this is a very old quote by APJ Abdul Kalam, but I had not really felt that until very recently, that dreams are not which you see in your sleep. Dreams are what which do not let you sleep. So yeah, that's all. Thank you for listening. That was truly engaging, ma'am. Thank you so much. We'll now open the forum for any questions. Any questions, guys? Anyone wants to share their experience of any of the activity? I had not really felt that until when The line, I am sabotaging my own potential to be the literal best. And it's not even a narcissistic side of this thing, it's just like I know that for a fact. So it's not new, and I don't feel like it has to essentially be a part of life transition, but something which this feeling kind of come up when we go to a new environment where we are new, but we are seeing people who have been accustomed to, who are very regular to that environment, and then those feelings kind of come across कि अच्छा मतलब मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा उससे पता है, like I could really do that, but still the inner critique kind of कि नहीं उसको तो इतना experience है, then they are doing so much things. So how do you think, how you yourself are thinking that तुम ऐसा out of the college, out of fresher, you will be able to achieve those things? So this is not a medical advice, this is not a counselor's advice, but this is my personal experience that there has to be a healthy inner self-critique so that it kind of pushes us to work more, to prepare more. I have also prepared like a whole speech, like I have over prepared, but I always prefer being over prepared कि अच्छा बहुत ज़्यादा population हो गया, so if I mumble over while speaking, what will happen? So I need to have my pages in my hand कि अच्छा I can at least refer to it whenever I'm mumbling. So always I feel healthy amount of self-critique is good. If you have your self-critique, I think so that indicates that you have a good self-conscious. If you never have the self-critique, you will go and slap someone and you'll never feel bad about it. You will never go back and think अच्छा मतलब I slapped it for right reasons or not for first place. So good amount of self-critique is good. In fact, I feel those self-critiques kind of little overpower when we are transitioning in our life. Those placement days, those decision days कि अभी MBA करना है, entrance देना है, ये करना है, वो करना है, उस time पे it becomes little more louder. But I feel it's a good thing that you have inner critique. That will give a sense of self-consciousness कि okay, at least there is someone who is stoking me कि are you doing this right or are you doing this wrong? मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स में हम करते हैं, एंड आई थिंक सो कोई अगर नो राइट कल मिल जाएगा पैसा नहीं. सो म्यूचुअल फंड्स में कंपैरेटिवली चलो एक हफ्ता 2 हफ्ता ये कोई तो लिक्विड फंड्स में यू ऑल्सो गेट 1 डे का T+1 का लिक्विडिटी. सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में विल डिस्कस अ लिटिल. ये वाला इज स्किप. सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एंड इसमें भी there are only specific mutual funds I would want your focus on is equity,
डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, ये अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे आपके फंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो इक्विटी फंड्स, आपको इक्विटी और डेट का डिफरेंस पता है? ओके, सो इक्विटी, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि इक्विटी, इफ आप लोग 10 फ्रेंड्स मिलके यू पुट 1 लाख रुपीज इन अ स्टार्टअप, ठीक है, 10 फ्रेंड्स मिलके स्टार्टअप में पैसे डाल दिया आपने, एंड दैट स्टार्टअप अर्न्स प्रॉफिट, कॉस्ट नहीं, 20 लाख रुपीज मिल गया, 20 लाख रुपीज कमा लिया. अब ऑब्वियसली 10 लोगों में बटेगा, एम आई राइट? यस. ठीक है, बट अगर वो 20 लाख लॉस करती है तो उसको कौन बेयर करेगा? 10 लोग. हाँ, वही 10 लोग बेयर करेंगे. वही इक्विटी है, इज जस्ट 10 लोगों की जगह यू बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर. वो कि आप इन्वेस्टर हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं पब्लिक डोमेन में, एंड फिर यहाँ पे जो आप पैसे दे रहे हो यू गिव इट टू कंपनीज. स्टॉक, जैसे कि आपने किसका स्टॉक कभी फेमस है? TCS का. तो आप TCS को पैसे दे रहे हो, भाई मेरे पैसे लो, बिजनेस करो एंड गिव मी द प्रॉफिट्स, मुझे रिटर्न्स चाहिए उस पर मेरे शेयर के लिए. दिस इज वेरी सिंपल, राइट? सेम वे डेट में क्या होता है? डेट में आप उधारी देते हो. अब अपने दोस्त से 10 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपये मांगते हो, 10 दोस्त से आप 10,000 रुपये मांगते हो, बोलते हो मैं आपको 12% इंटरेस्ट पे आपको पैसे दूंगा, ठीक है? सो यू आर लाइक ओके, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, अब कैसे भी है मिल गए, कर रहे. यू अर्न प्रॉफिट, यू डोंट अर्न प्रॉफिट. उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. उसको अपने इंटरेस्ट और उसको अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना उसने लेंड किया था उससे फर्क पड़ता है. सो यहाँ पे रिटर्न बहुत स्टैग्नेंट होता है. आपने किसी को उधारी दी है, यू डिसाइड 12%, एंड अभी बोलोगे 12% ही दे रहा है, बिकॉज बाकी मार्केट में अगर आप FD करोगे तो 7% ही होता है. सो 12% यू आर स्टिल गेटिंग गुड रिटर्न्स. आप किसी को लेंड कर रहे हो और आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हो. एंड वही जब आप कंपनी लेवल पे करने लगते हो तो वो डेट फंड्स बन जाते हैं. एंड म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी ओरिएंटेड डेट म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है कि वो लोग मेजर चंक इक्विटी स्टॉक्स में डालते हैं या डेट स्टॉक्स में डाल रहे हैं, वो आपका उसी से दोनों का डिफरेंशिएशन हाईलाइट होता है. एंड इन हाइब्रिड देयर इज अ गुड मिक्स ऑफ बोथ. सो माई इंटेंशन विथ दिस इज कि आप फ्यूचर में जब भी एक नॉर्मल ऐप खोल सको, सो यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. बिकॉज एज अ पर्सन हु हैड नो फाइनेंस बैकग्राउंड, हु हैड, मैं CA भी बनी हूँ, तो इट वॉज नॉट लाइक कि आई हैड पीपल इन माई फैमिली हु यूज टू टीच मी कि कैसे होता है. एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी. सो ओपनिंग एन ऐप एंड फिर देखना, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ बैरियर, टेक्निकल जार्गन्स आ जाते हैं बीच में, यू डोंट गेट व्हाट इज रिटन ओवर देयर. सो ताकि इफ़ यू ओपन एन ऐप तो आप खोल सको एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट. एंड आई एम प्रिटी श्योर आज नहीं तो कल आपके हाथ में सैलरी आएगी एंड योर नंबर 1 गोल शुड बी टू इन्वेस्ट. वरना आपको पता है 1 लाख सेफ में रखोगे तो वैसे ही रहेंगे. ये 3 चीज़ें टेक्निकल हो रही है बट ये लास्ट है, ठीक है? ये 3 चीज़ें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले यू हैव टू लुक एट द पिक्चर. CAGR इज रिटर्न, आप कितना रिटर्न उस पर कमा रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके. ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट किया है, सो यू वांट सम रिटर्न्स एंड दैट रिटर्न का इंडिकेटर इज CAGR. ओके. फिर बीटा इट्स लाइक आप मार्केट में इन्वेस्ट किए, कि मार्केट मतलब क्या? आप सुनते हो सेंसेक्स, निफ्टी इतने से ऊपर गई, इतने से नीचे गई, ठीक है? आपके रिटर्न्स पे उसका कितना इम्पैक्ट है इज कॉल्ड बीटा. अगर आपका बीटा 1 है, इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है सो योर रिटर्न इज ऑल्सो गोइंग अप. मार्केट इज गोइंग डाउन सो योर रिटर्न इज ऑल्सो गोइंग डाउन. दैट इज 1 बीटा. बीटा मतलब एग्जैक्टली जो मार्केट कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो इज रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग. बट आपका बीटा इफ इज लेस देन 1, इट मीन्स योर असेट इज लेस रिस्की. कि इफ इट चेंजेस बाय 1, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 80% का इफेक्ट हो रहा है. दैट इज 0.8 बीटा. अगर मार्केट 1 के ऊपर से चेंज हो रहा है, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 60% का ही डिफरेंस आ रहा है, तो 0.6 बीटा. तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स व्हेन यू लुक एंड दीज फिगर्स विल बी विजिबल ऑन द ऐप एंड यू हैव टू टेक लुक इनटू इट. थर्ड इज एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो इज लाइक यू हैव गिवन, मैंने बोला प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, you have given your money to the AMCs, they're not doing the job for free, right? So they charge you a money, they charge you a sum of amount, but if it exceeds
1.5% इज द हाईएस्ट. ओके, अगर 0.5 से लेके 0.75 तक है और एक्टिवली मैनेज फंड्स है, तो यू शुड गो विद इट बिकॉज दे आर चार्जिंग यू करेक्टली. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा आपके पोर्टफोलियो मैनेज करते वक्त. ओके, एंड इट एक्चुअली बिकम्स अ बिग पार्ट जब आपका CAGR वरना आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे ओवर द ईयर. एंड इन इन्वेस्टमेंट इन एवरीथिंग 1% भी मैटर करता है बिकॉज वो गोल्ड के इसमें जो गोल्ड का आपने एग्जाम्पल देखा था 45 लाख, उसमें CAGR वॉज 11%. तो 11% और 12% में बहुत बड़ा गैप आ सकता है. एंड आई कैन शो यू दैट विथ ये देखो. सो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 7 है एंड यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज आज के डेट में, इन 20 ईयर्स अगर आपका CAGR जो एनुअली आपका जिस रेट से पैसे बढ़ रहे हैं is 7%. So how much you will get in at the end of the 20-year period is 3,86,000. Okay, but if it's 12, your amount, look at the amount. Just कुछ percentages, but कुछ is never कुछ in investing. It's 964,629 at the end of 20 years, and that to one-time investment. You don't have to do SIP and or everything in a year. And if it's 3% का gain, 3% का difference, it's डबल. एक्चुअली सिर्फ 3% के इसमें कंपाउंडिंग हैज गिवन यू डबल द अमाउंट जो वो पहले 12% पे दे रहा था. सो दैट्स वाई आपको अपनी CAGR को बहुत ही ध्यान से देखना है एंड यू हैव टू लुक इनटू इट. अब मैंने सिर्फ लास्ट में स्क्रीनशॉट्स रखे हैं कि अगर इफ़ यू ओपन एन ऐप तो आपको ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड्स पे दिखती हैं. तो यहाँ पे आई थिंक सो आप किस फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू एक्टिवली लुक इनटू योर पोर्टफोलियो कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास भी थोड़ा लॉजिक रीजनिंग होगी कि इफ़ इन अ म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है बट यू थिंक कि हेल्थ इंडस्ट्री फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, इट्स योर ओपिनियन. ओके, सो यू कैन लुक इनटू इट कि आप अब जब म्यूचुअल फंड जो भी सिलेक्ट किया हो उस पर इफ यू क्लिक आपको पता चलेगा कितना सेक्टर एलोकेशन है, फाइनेंशियल डोमेन में कितना वो इन्वेस्ट कर रही है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में कितना इन्वेस्ट कर रही है. आपको इधर प्रॉपरली एक एलोकेशन मिलेगा. एंड इफ़ यू हैव थोड़ा सा खुद का भी सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एनालिसिस, यू कैन चेंज योर म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू दैट कि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, सो मुझे नहीं लगता ये म्यूचुअल फंड मुझे रिटर्न्स देने वाले हैं, सो आई इन्वेस्ट हियर वेयर आई फील सो. यू कैन यूज सम ऑफ योर ब्रेन बट AMC मैनेज करती हैं. सेकेंड इज इक्विटी टू डेट. ये भी आप देख सकते हो कि कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है. इक्विटी एंड डेट का लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. इक्विटी इज़ रिस्की क्योंकि मैंने कहा इफ़ लॉस होगा तो आपको बेयर करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं मिलता. एंड इन डेट आपको फिक्स्ड रिटर्न पक्का है, उनको आपको प्रॉफिट या लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता. सो हायर द इक्विटी का इधर यहाँ पे एलोकेशन, द मोर रिस्की योर म्यूचुअल फंड इज. एंड अगर डेट एलोकेशन ज़्यादा है या ऊपर नीचे हुआ है, इसका मतलब आपका सिर्फ कम रिस्की हो गया है करके, वो थोड़ा अच्छे से सस्टेन करेगा मार्केट के अप एंड डाउन. देन यहाँ पे आप फंड मैनेजमेंट, अब मैंने बोला AMCs आपको आपके फंड को मैनेज करती है. सो आप फंड मैनेजर के बारे में भी अपने उस पोर्टल या वेबसाइट पे जान सकते हो कि विच इज़ द फंड मैनेजर कि जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है. लुक इनटू इट, सी वो क्या प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं बिकॉज आपने अपना पैसा उन्हें इन्वेस्ट करने दिया है. देन आई विल टेल कि यहाँ पे एक होल्डिंग सेक्शन, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि देयर इज होल्डिंग सेक्शन कि आप इतने स्मार्ट बन जाओगे. इफ़ यू थिंक कि कुछ स्टॉक में आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड वैसे भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है. सो यू कैन लुक कि उसने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है आपके फंड मैनेजर में. आपको सारे के सारे स्टॉक्स जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया गया है वो सारा लिस्ट वहाँ पे दिखाई देगा. सो दिस वॉज माई थिंग. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. माई ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे वॉज कि यू गेट अ बेसिक आइडिया कि हाउ टू लुक एंड हाउ टू मैनेज योर ओन फाइनेंसेस. देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड यू. इसमें इन्वेस्ट करो, आपको कोई बोलेगा स्टॉक खरीदो नीचे गिरने वाला है, इट्स डे ट्रेडिंग में चले जाओ, इट्स वेरी रिस्की. आप अपना हार्ड अर्न मनी आप जब कमाने लगोगे या जब कमा भी रहे हो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि डू इट, जस्ट ट्राई, बट अपना रिस्क खुद चूज़ करो कि व्हाट अमाउंट आपको रिस्क में डालना है कि ये मैं रिस्की एसेट है तो यहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग करके इसको उड़ा सकता हूँ. बट अपना सेविंग जो आपके फ्यूचर आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेगा विल ऑलवेज बी अ लॉन्ग टर्म प्लान. थैंक यू सो मच. Just make space for you.
Okay. So now what I'm going to do is, some then come and stand over here also. We have enough space here. Yeah. Okay. You can. Yeah. You can come. Come. Okay. You have space to move because I want you everyone to move. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to read out certain statements. Okay. There are around 5 statements. If that statement applies to you, you move one step ahead. Okay? If it does not, just stay wherever you are. Okay? So let's start? Yes. Yeah? So, first statement is, step forward if you have ever taken responsibility in a group project. Okay. Only if it applies to you. If you have taken... आगे के पीछे मतलब ज़्यादा जगह नहीं. Okay. Second, step forward if you have helped someone understand a difficult concept. Okay, good. Step forward if you have spoken up when something felt unfair. Very nice. So I think I should wind up the session today. Step forward if you have solved a problem others were ignoring. Yes. Yes. Okay, good. Step forward if you have encouraged someone who was struggling. Okay, good. Now just see from where you started and where have you moved. Just turn around. Okay. What does this indicate? We have come a long way, yes, and we have a long way to go. Yeah? Okay. So, just see, what does this indicate? This is basically nothing but some traits of you becoming the future leader. Okay? Some traits of you inspiring others because you have done what others have ignored. You have done what others have not been able to help, or you have taken that initiative, you have taken that responsibility. जो लोग नहीं move हुए, I don't think much are there, but that does not mean that it stops here. Okay, this is just the start. Okay, this is just the start where we are going to take that step today to move forward. Okay, just sit down. Thank you. Okay. Yeah. So basically, as I mentioned, every one of you, each one of you here has shown that simple trait where you have shown that leadership quality. And as I mentioned, leadership is not about the title. Okay, always remember it's not about the title anymore. It's about your behavior. The way you behave, the way you show your behavior indicates that that is going to lead you to a leadership position. Okay? Now, can we form small groups? Yes. So, you all can be one group, you all can be one group. आप 5 एक group, ठीक है? आप 5, 6. You all can join them. हाँ, you can join them. Okay, you all can be on. Okay? You want to join it? Okay, which group you are joining? Okay, so now I'm going to give you a scenario. Okay, and you have to find out a solution. Okay, now the scenario is, imagine, or rather, imagine only. Imagine that you guys, so your group, okay, so 5, 6, how many ever members are there? You guys are stranded on an island. Okay, एक aeroplane crash हुआ है, and you guys are stranded on an island, and you just have 1 minute to collect life-saving items which are
there in the aeroplane. ठीक है, aeroplane में we know that we have an emergency kit which will be helpful. So उसमें 10 चीजें हैं. I'll read out that. Okay. Once I read out, you need to identify which are the 3 items as a group you will select which will help you survive for this day, next day till the rescue team comes in to save you. वो कब आ रहा है हमको नहीं पता. ठीक है. So you are stranded on an island. You have to pick up 3 items. ठीक है. I'll just read out. Listen carefully. This will also show your listening skills. I'll just read out once. Okay. So first is a knife. Second is a rope. Third is bottle of water. Fourth is mirror. Fifth is first aid kit. Torch. Blanket. Compass. कितने हुए? Compass. 8. Compass. Then we have an axe. Axe. Okay. And we have a matchbox. Okay. I give you 5 minutes. What's the third item? अरे कोरोना वायरस. Okay, I give you 5 minutes. As a group, you think which are the 3 items you will pick up, which will help you survive, and I want to know the reasons as well. Okay? Nati Chaudhary, the president of Rotaract Club of New Bombay Seaside, along with. Hello guys, myself Rotaractor Harsh Kanade, president of Rotaract Club Naima Sunrise, along with. Hello everyone, this is Rotaractor Heath Rajgo, the vice president and president-elect of Rotaract Club of Smart City Navi Mumbai. And we hereby adjourn NTT.